Hello, students. Welcome in social science class. Our today's topic is ordinary people and the crimes against humanity. आम लोग और इंसानियत के खिलाफ जुर्म. How did the common people react to Nazism? जो आम लोग थे उन्होंने नाजिज्म के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई या कैसे रिएक्ट किया. Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. They left hatred and anger surged inside them when they saw someone who looked like a Jew. They mocked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने नाज़िज़्म की आंखों से ही दुनिया को देखा. यानी जिस तरीके से नाज़िज़्म जो उनका नज़रिया था, बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा भी था और कबूल भी किया था. और वो उनसी ज़बान में बात करते थे. वो नफ़रत की ज़बान थी, वो गुस्से की ज़बान थी, और वो एक जीव को एक जीव की तरह देखते थे. यानी एक यहूदी को एक यहूदी की तरह ही देखते थे. उनके घरों को, यहूदियों के घरों को निशान कर दिया गया था. एक सस्पिशियस यानी मशकूक पड़ोसी की नज़र से देखा जाता था. और वो बिलीव करते थे इस बात में कि नाज़िज़्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेल-बीइंग. कि नाज़िज़्म जो है इससे प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, बेहतरी आने वाली है, और इससे जनरल वेल-बीइंग का सबका भला होगा. But not every German saw a Nazi. Not every German was a Nazi. Many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witness. They were too scared to act, to differ, to protest. They preferred to look away. Pastor Niemöller, a resistant fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in face of brutal and organized crimes committed against people in Nazi Empire. तो सारे जर्मन जो थे वो नाजी भी नहीं थे. बहुत सारे लोग जो थे वो नाजिज्म के ख़िलाफ़ थे. जर्मनी के जो अदर देन जीव यानी यहूदियों को छोड़ के भी जर्मनी में ऐसे लोग थे जो नाजिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे. एक मेजॉरिटी जर्मन की जो थी वो लेकिन क्या थे, पैसिव लुकर्स, ऑनलुकर्स. उनको तरस भी आता था, उनको रहम भी आता था, लेकिन वो खामोश थे. उनकी ज़ुबान नहीं खुल सकती थी. उनको डर था, खौफ था. इस वजह से वो कभी मुखालफत में बोल भी नहीं पाए और ना ही वो प्रोटेस्ट कर पाए. और उन्होंने यही चूज़ किया कि वो नज़रअंदाज करें, और वो नज़रअंदाज करते रहे. The uncanny silence amongst the ordinary Germans in the face of the brutal organized crimes committed against people in the Nazi Empire. तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन लोगों के अंदर नफ़रत जो नाज़िज़्म के ख़िलाफ़ थी वो थी.
ऐसा नहीं था कि लोग सब नाजिज़्म को ही पसंद करते थे। वो खामोश थे उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस क्राइम के ख़िलाफ़ जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहा था। He wrote movingly about this silence. First they came for communist. Well, I was not a communist, so I said nothing. तो पहली बात ये कि वो कम्युनिस्ट के इसलिए खामोश थे लोग कि पहली बात वो सोचते थे कि कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ आए तो हम कम्युनिस्ट नहीं, तो हमें क्या करना है। Then they came for the social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. वो सोशल डेमोक्रेट्स के खिलाफ थे, तो मैं एक सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता। When they came for the trade unionist, but I was not trade unionist. जब वो ट्रेड यूनिस्ट के खिलाफ आए तो मैं ट्रेड यूनिस्ट भी नहीं, तो मैंने कुछ नहीं किया। एंड देन दे केम फॉर द जिफ, और फिर वो यहूदी के खिलाफ आए, बट आई वॉज नॉट ए जिफ, और मैं यहूदी नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं किया या मैंने थोड़ा थोड़ा किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, जब वो मेरे खिलाफ आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, तो उस वक्त कोई नहीं रह गया था जो मेरे लिए खड़ा होता। Knowledge about Holocaust. Information about Nazi practices had trickled out Germany during the last year of the regime, but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize that horrors of what had happened while the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble. The Jew wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust. At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks, and created archives. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incrimination evidence available in offices. Yet the history and the memory of the Holocaust live on the memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials, and museums in many parts of the world today. These are a tribute to those who resisted it and embarrassing reminder to those who collaborated and warning to those who watched in silence. तो होलोकॉस्ट के बारे में नॉलेज क्या होनी चाहिए हमें कि information about the Nazi practices had trickled out Germany during the last years of regime. तो आखिरी जो साल था जर्मन रजीम का, वो ये जो नाजी प्रैक्टिस का, इसने उसको दुनिया के सामने ला खड़ा किया था। लेकिन ये तभी हुआ जब वार जर्मनी में ख़त्म हुई थी, जंग ख़त्म हुई थी, तो तब दुनिया को पता चला था कि जंग के बाद जर्मनी में
کس قسم کا ڈراؤنا ماحول پیدا ہوا ہے، اور ان کو یہ پتہ چلا جو ہیں، جو یہودی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ یاد رکھے کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو نازی کلنگ آپریشنز میں، جس کو ہولوکاسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور at its height a ghetto inhabitant had said to another that a ghetto inhabitant ایک دوسرے کو کہتا ہے he wanted to outlive the war just for half an hour، کہ وہ جنگ کو ایک آدھا گھنٹہ اور دیکھنا چاہتا ہے۔ Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany۔ اور اس بات کا جب وہ کہتا ہے کہ وہ جنگ کو ایک آدھا گھنٹہ اور دیکھنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جرمنی میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ This indomitable spirit to bear witness and preserve the documents can be seen in evidence who wrote diaries, kept notebooks and created archives۔ بہت سارے ایسے لوگ جو تھے، لوگ انہوں نے اپنی ڈائریز بنا کے رکھیں، یہ کچھ مطلب یادداشت جو تھی دنیا کو بتانے کے لیے نوٹ بکس بنا کے رکھیں، اور کچھ آرچیوز جو تھے وہ بنا کے رکھے۔ اور اسی طریقے سے جب جنگ ختم ہو رہی تھی تو نازی لیڈرشپ جو تھی انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا پیٹرول فنکشنریز کو کہ تمام جتنے بھی ایویڈنسز ہیں ڈفرینٹ آفسز میں ان کو جلا دیا جائے۔ پھر بھی دنیا کے پاس ہولوکاسٹ کی ایک میموری ہے، ڈاکومنٹریز ہیں، شاعری ہے، پوئٹری جو لکھی گئی ہے اس معاملے پہ، میموریلز ہیں، میوزیمز ہیں، موجود ہیں جو آج بھی اس ہولوکاسٹ یعنی اس ظلم کے بارے میں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اور یہ سارا جو یادیں ہیں یہ ایک ٹریبیوٹ ہیں ان کے لیے جنہوں نے اس کے خلاف لڑا، اور ایک ریمائنڈر ان کے لیے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اور ایک وارننگ ہے ان کے لیے جو اس جنگ میں خاموش رہے۔ So this much is suffice for the day. Thank you.